we live? Broadcast is live. We're live. चलो गाइस वी आर लाइव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग मतलब आए हैं लाइव पे अभी व्यू कर रहे हैं, वेलकम। आई एम तन्मय घोष फ्रॉम ऑटोट्रॉनिक्स एंड दिस इज द रेस मंकी विद मी टुनाइट, वन ऑफ द Hello, फर्स्ट everyone. पैनल मेंबर्स फॉर टुनाइट्स पॉडकास्ट। तो We- क्या कहते हैं, वही है जो वीकली हो रहा है, जो गाड़ियाँ लॉन्च होनी है, लॉन्च हो चुकी है, उनको डिस्कस करना है। अच्छा, पहले ये चीज़ बताओ कि टोयोटा वाले क्या स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं कि पहले सिर्फ हाइब्रिड के रेट निकाल दिए, वो भी 3 वेरिएंट के। See, क्योंकि जो इंजन है हाई राइडर के अंदर, that is Toyota's own baby. वो टोयोटा के स्टेबल से आया है, and of course because the brand through its communication and marketing is promoting hybrids at large. They are promoting the Camry. They are promoting the high rider now. तो उनका स्ट्रैटेजी ये है कि हम लोग एक कार्बन न्यूट्रल ब्रांड लोगों को दिखाएं कि हम लोग हाइब्रिड हाइब्रिड गाड़ियां ज़्यादा है. The other mild hybrid version that has Maruti components and the Maruti engine is something which Toyota is trying to sideline and keep it more muted. तो ये रीज़न है कि they just want that Toyota brand image to be associated with hybrids and electrified cars. तो इसी वजह से है. But the prices that they have launched with full hybrid जो उसका S variant से start है, I guess 15.11 नहीं, lakhs. आई थिंक ई से, E से है उसने. ई E एफ से कैसे है, does the जो E भी है, variant जो get भी है, full hybrid? जो भी आई थिंक बेस प्लस वन, या आई थिंक बेस के करीब ही है जो है। बट लोग जिस बात से मतलब होंडा से शिकवा कर रहे थे ना कि उनको होंडा सिटी ई एच ई भी एक बेस वेरिएंट में दे देनी चाहिए थी, वो Correct. काम टोयोटा वालों ने कर दिया। तो ये And तो this is अच्छा very काम किया smart. इन्होंने। That is very very smart actually क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर होंडा ने ये किया होता अपनी गाड़ियों के साथ, अपनी सिटी के साथ, कि वो फुल हाइब्रिड वर्जन जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये लोग कर रहे हैं कि उनके बेस वेरिएंट्स, बी इट HRV, बी इट सिटी, बी इट द जैज, they give full hybrid systems in them from the base variant itself. तो अगर वो स्ट्रैटेजी इंडिया में लेके आते, somehow Honda's internal team, their marketing, their entire strategy team is as bad as Ferrari's. उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये करें तो करें क्या. एंड सिर्फ होंडा इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब दे आर टेकिंग अ नहीं लॉट नहीं, और ऑफ ये इंस्पिरेशन अभी फ्रॉम से नहीं है। अदर फॉर्मूला वन. इन, इन्होंने ना ये गलत कॉल्स लेना जो चालू किया, वो मोबिलियो के दिनों से चालू किया। ऑफ कोर्स नॉट इवन मोवेलियो. इन्होंने BR भी लॉन्च करी, इन्होंने WR भी लॉन्च करी. दे लॉन्च्ड अ वेरी एक्सपेंसिव Honda Accord. I guess since the year 2015 is when the graph for Honda started to come down. द Although प्रॉब्लम उनके इज द प्रॉब्लम इज दैट दे डिड लॉन्च अ सर्टेन सिविक एंड अ सीआरवी इन बिटवीन, बट व्हेन सिविक was being offered with a 1.5 turbo, हम्म, they gave a 1.8 naturally aspirated with CVT। नहीं, अब क्योंकि बात यही, इंडिया के अंदर 1.5 टर्बो को पूरा डेवलप करना, यहाँ लोकली उसको बनाना, उसके लिए डाई बनाना would have been a very expensive affair, and Honda Civic for Honda India is not a volumes player. तो आई डू अंडरस्टैंड कि उनके लिए वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, द अच्छा एंटायर प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्चिंग अच्छा, दैट. एक बात बताओ, उन्होंने 1.6 आईटी टेक को भी तो क्या कहते हैं बनाया है ना इंडिया में। बट डीजल की डिमांड कितनी ज्यादा थी वो भी तो देखो ना, जब वो बिकी बट डीजल सिविक बिकी कितनी सी? बहुत. मुझे तो रोड पे दिखती नहीं। सी इट्स स्टेट टू स्टेट. जैसे दिल्ली NCR हरियाणा के अंदर इतनी डीजल सिटी थी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटी, सिटी. इतनी डीजल सिटी बिकी है. नहीं नहीं, तो आई डीजल सिटी ठीक है, मैं डीजल सिटी की बात कर ही नहीं रहा, मैं सिविक की बात कर रहा हूँ कि अगर हाँ, उन्होंने 1.6 आई, डीजल सिविक नहीं. पीपल डोंट हाँ एसोसिएट होंडा सिविक विद डीजल कार्स. It's हाँ, always been that so then 1.8 so liter that engine. that and no, this volume of scales would have been good because the same engine is used in the CRV। तो CRV Correct. में वो 2 लीटर देने के बजाय अगर वो 1.5 देके दोनों गाड़ियों को दे देते,
तो उनके लिए वो स्केल ऑफ इकोनॉमीज अचीव हो सकती See, थी। it's all about how they achieve and what sort of capital that they have on standby. वो उन लोगों के पास नहीं था उस वक्त जिस टाइम पे ये लोग सिटी, सीआरवी और सिविक के ऊपर काम कर रहे थे, एंड they could have invested a little more. They could have taken help from Honda Japan into developing some cheaper iteration of that engine in a cheaper way, and thoda bahut wo bach jati, and they could have used that engine, that 1.5 turbo, in a lot of cars, and it would have survived the backlash that the entire um, industry gave on Hyundai, Creta, Kia, Seltos. ये क्यों इतनी पॉपुलर हुए पेट्रोल सेगमेंट में? बिकॉज दे वर एबल टू केटर टू दैट नंबर्स enthusiasts जिनको हाई बीएचपी, हाई टॉर्क फिगर्स नजर आती थी. एक्चुअली Although those एक्चुअली cars are उन्होंने not एक्चुअली एक्चुअली अगर टर्बो पेट्रोल्स का रेवोल्यूशन कोई लेके आई है तो वो हुंडई और किया दोनों मिलके लेके आई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आई मास डोंट. मार्केट में आई थिंक मास मार्केट में जो टर्बो पेट्रोल का जो रेवोल्यूशन था वो शुरू हुआ है पोलो जीटीटीएसआई से. वो शुरू उससे हुआ, लेकिन जिसने क्या कहते हैं पेस पकड़ ली थी। हाँ, of पहले course, of क्या था, course, of course. पहले क्या था कि टर्बो पेट्रोल कोई लेना चाहता नहीं था अनलेस इट वाज अ जीटीटीएसआई। That's correct. बट क्या बट कहते वही है कि हैं जो डीसीटी ये सब चीजें एंड एनी विच वे, बिकॉज Hyundai इज अ मास मार्केट प्लेयर, एंड इट had that sort of monopoly already in the market, जहाँ पर उनको बहुत आसान हो जाता है कोई भी टर्बो गाड़ी बेचने में. तो वो कर रहे हैं, and they did it although their cars are not as good and not as well engineered as the competition. वो तो उनके जीएन कैप रेटिंग्स में दिख जाता है। And Siddharth Shankar also, for the other part, promotes Hyundai Turbos quite a lot. He's quite a N-line enthusiast, although those cars are pretty problematic. They're more problematic than his so-called Italian small cars. नो हिज इटालियन स्मॉल कार्स आर परफेक्ट। मैं उनको यही बोलता हूँ, बोलता आप ठहरे पालियो क्या कहते हैं आवाज पुंटो वाले, आप क्यों क्या कहते हैं इसके i20 एनलाइन के लेवल तक Correct. जाना चाहते हो? Correct. एंड इज बिकॉज ही वन लुक एट हिज पालियो एंड यू विल फॉल इन लव विद दैट कार। Oh, I've seen इट that. इज I've driven that car. It's very natural. It does feel very communicative to the driver, and it's always a pleasure to be behind the wheel एंड of such एंड देखो 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 कौन आया। a bade log. Very nice. So, So what is the discussion? Some turbo petrols? no, no, no. So we came down to talking good things about your Palio and how it feels very natural to drive. So I've driven his car at one of the Cars and Coffee. He let me drive his car, his prized possession, the Palio 1.6. And although we have gotten so used to all these new generation cars with snaps, reaction. Hold on, that's my dog. How should you know? So we've gotten used to all these snap reaction, quick cars, ये turbo, सब कुछ electronically actuated. So our remote memory has sort of given away the fact that the cars which were mechanical, which were hydraulically driven, how they used to feel, and that Palio that he's driving around in is actually quite a well kept piece, and it actually reminds us enthusiasts कि गाड़ी थी क्या actual में. अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो इसलिए गया. इसलिए Everything is इसलिए कहते हैं, इसलिए हम कह रहे थे सिद्धार्थ भैया को कि क्या कहते हैं आप ठहरे पालियो आवाज पुंटो वाले, क्यों क्या कहते हैं i20 एनलाइन के पीछे पड़े हो? I20 N-line is bad, to be honest. मैंने 6 ऑलमोस्ट 3 महीने वो गाड़ी रखी, एंड मैंने ज़्यादा चलाई नहीं. आई जस्ट, एंड इफ Hyundai PR is watching this, I am not afraid of the backlash that I might receive through your media teams, but that car does not have good quality. Your electronics are faulty, your mechanical components are faulty. It's a lot of lackluster in your engineering prowess. So there's a long way to go for you to improve. What's my doubt? Would you pick up an Altroz DCA then, if you want to buy an automatic car? It's worse. It's worse. The Altroz DCA has so many problems. I'll tell you. So my website
if it has referred 10 Altroz DCAs, 6 out of those 10 have had issues. Tata, in the current scheme of things, in the last 6 to 7 months, especially in the cars that have been manufactured this year in 2022, have had multiple electronic issues. And the DCA gearbox is any which way very faulty. I don't know Have what to part. be a bit louder. I'm not able to get you. Am I audible now? I think I should get a mic. Yes. Yes. So my thing is all the Altroz DCA cars that have been manufactured this year in the year 2022 have had multiple issues. That DCA gearbox is faulty. It has a lot of issues. It नहीं does एक not मजेदार एक I know it sounds weird. I drove the Punch AMT and the Altos DCA back to back, have. and I felt that the Altos DCA the DCA literally saps the remaining power out of the engine. The Of AMT course, somehow channelizes the power in the Punch better. I have a Tiago AMT with me. I felt, say hi to the race puppy. That's the race puppy. That's the race Hello. puppy. That's the race puppy. So what? So which automatic hatchback would you buy if you want to buy? There is nothing left. You I obviously am missing the Volkswagen Polo. very good, very good When now. we're talking about a 6 speed, not So the it diesel. means it probably means that you have no option but to buy the i20 N line despite the fuel pump failures. अरे Not क्यों really. If i20 I had to एन buy लाइन क्यों a लेना? car in that price bracket, कम्यूटर I would ऑटोमेटिक take लेनी है? Magnite CVT. नहीं Huh? कम्यूटर नहीं, Magnite कम्यूटर CVT. हैचबैक लेनी है, छोटी. कम्यूटर हैचबैक लेनी है, कम्यूटर हैचबैक लेनी है तो क्या कहते हैं है ना अपनी क्या कहते हैं i20 सीवीटी ले लो फिर भले जो Huh? 1.2 Correct, वाली आती है. correct. That's a good option. The 1.2 CVT makes sense. See, ना फ्यूल i20 में जो 1.2 engine है, that's the same Kappa unit that they used आज से 10 साल पहले, which is in my car. The same component, almost the same components, the same infrastructure of the engine, the architecture, not the infrastructure. For some And reason, Tanmay was making some real what should I say plus points that Baleno AMT is a good car to buy. I don't know for what reason, but he likes the Baleno, I guess. no no, Yes. I've never See, said Yes. no Yes. now that's no a good debate. But in my opinion, if I had to comfortably pick up a hatchback, which is automatic, I would do the 1.2 CVT, the IVT that Hyundai calls in the i20. और अगर किसी को जीएन कैब रेटिंग का क्या कहते हैं ठीकरा फोड़ना है उसका ढिंडोरा पीटना है तो जाके जैज सीवीटी उठा लो जब तक स्टॉक्स अवेलेबल है. Jazz की कितनी है इनका रेटिंग थी? I don't remember. Jazz CVT is going to be discontinued in September anyway, I think this month or the month after next. To be honest, I wasn't that much impressed. So quite a lot of flaws. Number one, the car is already 9 years old in the global scenario. Number one. Number two, the seats are okay. The car is spacious, but then the seats are not that comfortable compared to the competition. Number three, it's a safe car, right? But then again, I'll tell you, Honda too have been having consistency in, I mean, rather inconsistency in quality. So some cars obviously are built well, but there are some cars which are having AC issues or steering rack issues or small things are there. In fact, on the previous Gen City and the Jag, so you have to, really understand that if you're seeing that Honda is a reliable car any day, I mean, they're not that much anymore. It's not Like they used to reliable be. anymore, I guess. It used to be very reliable. But then when Considering when you're talking about the Volkswagen Polo, if you have to buy even a pre-owned Polo, you have to be mentally prepared for premature wearing of shocks of the steering rack, of the ABS sensors, of the mounts. So these things, Polo. obviously, the localized Gabriel products I'm talking about, and they don't last long, to be honest. Friends, Volkswagen in the yeah. current scheme of things, any which way, is bad in quality. The Slavia, everyone's going gaga. Oh, the Kushaq, it's so good. Oh, look at the Slavia, it's so nice. ओ भाई Oh, भाई माफ कर माफ करो. But उसमें then, but then, इतने quality issues in गाड़ियों में. I don't know what. I used to intern with Volkswagen back in 2014. then you don't have the option, right? You don't have the option, but to pray that Ford India comes back. Oh yeah, that's actually the prayer. वो आएगी भी वापस कोई चांस नहीं.
कि तूने वीडियो कैसे बंद कर दिया? नीचे है ना स्टॉप कैमरा का ऑप्शन. Why have you shut your video off? Why can't we see you? Are you secretly watching Coffee with Karan? No, I don't make bad choice. No, the problem is that I'm So having So iced I tea, was, and that iced tea, so I was the iced tea is in a bottle, so it will look wrong. obviously I was just watching this. You can see the 140 Mercedes 126. Excuse me, W140. 140, 140, correct. Just realizing how good the days were when Mercedes used to over-engineer cars and they were losing money on every 140 they made. A lot of innovations, but then after that they too. I think for me, after the 140, the S class was finished. After that, none of them. I think the W222, the last generation before the 223 came in, that was the best. 221 was also good. See, the 65 AMG in the 221 was badass. 604 HP, I V12. remember I I was had in Bombay I had and the Jinping and I I went owned the down to I Goa have in owned and driven the February. 65 AMG. But I've driven the मेरे पास S500 थी वो from गाड़ी. from Bombay to Goa and back. वो गाड़ी रिवर्स में व्हील स्पिन मारती थी. वो A65 AMG रिवर्स में व्हील स्पिन मारती थी. भाई हमें तो बट ये था हर 3 महीने में उसका हर 3 महीने में इग्निशन कॉइल चेंज करना पड़ता था. 2 लाख का फटका उधर लगता रहता था. TSI की इतनी बट तारीफें चल चीज थी रही यार. हैं. लेट मी टेल यू दैट जितना अब्यूज फ्रेंडली उस समय ये फिएट के टीजेट इंजन्स होते थे, अभी तो खैर टीजेट्स के आते नहीं है. द वन व्हिच माय कार हैज, people have been pushing upwards of 300 350 HP in Eastern Europe on that same engine block. So the amount of abuse these Italian turbos they make, जर्मन्स तो जर्मन्स तो इतने तो घंटे दे देंगे इतने टाइम पे जितना आप उस पे क्या कहते हैं बड़ा टर्बो लगाओ and do whatever the kind of conversion you want, right? So But the obviously thing is, are you brave enough to do that conversion on your Punto? I've already got it done on a friend's Abarth 210 HP stage 3 working fine. Bombay? Bombay? It's I'm focusing more on the dynamics. That car doesn't have the dynamics. That car is on stock suspension, but I'm focusing on the dynamics as of now. Talking of dynamics, I drove the XUV 400 yesterday. वो भी इनके महिंद्रा के टेस्ट ट्रैक के ऊपर. सस्पेंशन एक्सीलेंट, बॉडी डायनामिक्स एक्सीलेंट, टायर्स एम्बार्गो नहीं है. मैं कह रहा हूँ इतने एम्बार्गो नहीं कुछ अल्ट्रा बोलने लो पे. रेजिस्टेंस टायर्स डाले इन लोगों ने. 4 बजे तो हो गया खत्म एम्बार्गो शाम को. हाँ, I'm putting up. I was अच्छा. editing the video before we started off this But podcast. then he's a fan of the copper accents on the grill and on the roof. Who, नो me? ईशान, नो उसको कॉपर नो से नो बहुत सर. इट्स कॉपर से इसको मैंने बहुत प्यार हो मैंने रखा है. literally अपने वीडियोस में ये चीज मैं बताता डाली है हूँ. that it's a very feminine. Every girl who saw that post and story of mine on Instagram about the XUV 400 and copper accent, they're like, oh, such a cute car. Of course, it's a cute car because it looks like your jewelry that you bought from Sarojini Nagar. Guys would not like that car. The moment a guy buys that मैं car, they're बताता gonna हूँ. change that copper insert to I'm black. sure, I'm sure, I'm sure 100% it's just like Tanmay pretending he doesn't want a Tesla, but he loves the Tesla to be honest. And You and नो your Tanmoy rants on नो Tesla, man. he has an affection towards Tesla and gonna end up he's gonna end up buying a You Tesla won't semi, believe. to be honest. No, I'll never get a Tesla. I would rather Yes. walk all my life than get a Tesla. They are not bad cars, but they're not the best. No, they are bad. Their fit and finish is the worst. उनकी फिट एंड फिनिश टाटा टियागो से गंदी है. मैंने देखा है जाके. अपने आंखों देखा हाल बता रहा हूँ मैं. टाटा I टियागो से believe गंदी है उनकी. I have briefly experienced the Model S in Bombay, but मेरे को लगा चलो ठीक है, मतलब it's nothing too bad, it's nothing too special either. But जब मैंने प्राइस सुना मैंने कहा नहीं, I have better cars to play around with. Where is he gone now? Anyway, so XUV 400 great नहीं handling. मैं बताता हूँ. अगर टेस्ला लेनी है ना
तो उससे बेटर ऑप्शन आपकी XC40 रिचार्ज है और C40 रिचार्ज, जो वोल्वो की रिचार्ज सीरीज course, आती है। of course, any bloody day. That car is the fastest under 5 seconds for that price. Which 59 car? lakh No, XC40 for me, recharge if that I I got in see, the last year. I'm not against EVs, but the Polestar 2 cross sedan is Oh, actually by cheaper the way, than the I have Tesla Model Y performance. screenshots officially of the XC90 recharge on हाँ the हाँ हाँ Polestar हाँ। XC90 sort of a thing that these guys are launching. तो अभी उसके renders किसी ने तो spy करे हैं. So they have officially leaked it and they look quite nice. तो मैंने How can they? पोलस्टार 2 देखी थी दुबई में। What a car! If there is a car that so there are only two EVs that can probably come in my house in the near future. One is the Polestar 2 and the other is the Mustang Mark Mark Electric. I think Not your, the not the e-tron RS GT. भाई वो too बहुत expensive. महंगी है, बहुत महंगी है, इंडिया में भी गाड़ी कितने लोगों जबरदस्त ने है खरीदी है? दो लोगों ने बस. दिखी भी यार, है क्या? लेकिन गाड़ी जो भी क्लास है दो वो। कह रहे हो? There's one in Bangalore which probably would have drowned up till now, and there's one in Chennai. यही प्रॉब्लम है ना, दिल्ली मैं एनसीआर में अच्छी गाड़ियां लेते नहीं है लोग, ऑल बाय फुकरा कार्स Bro, एंड there देन are there are 7 Taycans in Delhi. टाइकन इज अ मेन स्ट्रीम कार यार। It's fast. अब वो टाइकन का कौन सा मॉडल है? टर्बो तो कम ही होगा, जो होगा वो बेस होगा या फोरएस। चार टर्बोज हैं, बाकी सारी नॉर्मल है. 4 टर्बोज हैं दिल्ली में, 4, और एक टर्बो है उसमें से, उन चारों में से. अनिकेत चौहान लिख रहा है डीजल्स कोई क्यों नहीं बोलता। यार डीजल्स हमें Oh, पसंद diesel. बहुत है, Oh, yes, लेकिन yes, yes. This is one of the topics that I wanted to touch. डीजल्स का टाइम खत्म है। आई एम आल्सो पेट्रोल कन्वर्ट आफ्टर सेलिंग द डीजल पुंटोस एंड ड्राइविंग I द पेट्रोल I कार्स। absolutely think if you want to do long distance journeys, there is nothing like a diesel turbo car. Period. मेरे पास XUV 700 थी डीजल, मेरे पास XUV टर्बो पेट्रोल थी. बॉस, I was extremely happy with the diesel. Extremely happy. and yet मेरे you को managed to eke out 27 kmpl from the exactly, XUV I had petrol. 27 kmpl का average on a 150 kilometer road trip that I did on the Eastern Peripheral and Western Peripheral Expressway आई एम through सेइंग around. अबाउट द पेट्रोल से भी तो कितनी 15 मैंने 16 तो पेट्रोल से निकाली थी। 20.5 का एवरेज निकाला था, but then I was using 100 octane fuel. That is really expensive. I'm spending हाँ 160 rupees per liter on that fuel. That was extremely. Actually, it's all about the engineering aspect. If you put normal fuel or 95 octane fuel, it's not going to give the best thermal efficiency that the engine is capable of. It's running on a 2.6 bar pressure boost off in the turbocharger. तो नहीं, अगर तो तुम जितना स्कॉर्पियो अच्छा क्वालिटी क्लासिक का कितना पेट्रोल यूज देगी? करोगे उतना अच्छा ती- एवरेज देगी वो. स्कॉर्पियो क्लासिक 30 दे देगी हाईवे पे। Boss, that's a challenge that Mahindra technical guys have been doing. I met them in Chennai day before yesterday, and उन्होंने यही कहा कि when we'll be sending you the car for the week-long period, we really want you to touch that 30 kmpl ka mark. I was like, चलो देखते हैं. And I think it is capable of doing that because वो engine के सिलेंडरों के अंदर it is spraying lesser fuel. It is a lighter car. It has I mean, although it's not as good in aerodynamic efficiency as the N line, as the Scorpio N, not the N line. Why am I saying N line? Everyone's calling it an N line somehow. Uh, but because of that lower power and similar size of engine, better torque and lighter weight, no, it is capable of doing 30 km. I don't think so. It's going to be any more difficult to get that 30 आई मीन यू kmpl. डिड आई मीन यू डिड गेट कितना 27 kmpl फ्रॉम द 185 bhp इंजन। Of course, तो the same एटलीस्ट तो unit होने has got चाहिए। tuned आना चाहिए. And it shouldn't be a very very difficult task either. मैंने बहुत briefly चलाई Scorpio Classic. The suspension is done in a very well way. But honestly speaking, अगर वो गाड़ी लेते हो ना, कैप्टन सीट वाला वर्जन उठाओ और लास्ट रो फेंक दो, सिर्फ डिक्की रखो उसको. Just keep it as a strict 4-seater and you'll नो, enjoy that. गेट द 8 सीटर, क्या कहते हैं, एंड रिमूव द बेंच ऑफ द लास्ट रो। Yeah, and make Siddharth Shankar sit in the bench seat at the back. and Yeah, then and then and
and then do a track day on BIC with him sitting behind. वही है. I think Mahindra is going नो really, बट टेल really. बट वो क्लासिक जो चलाई थोड़ी थी उसमें गियर शिफ्ट का बताओ, कुछ है लगा फर्क? Yeah, gear shift तो वही है, is the same system as what you get in the Thar and what you get in the normal Scorpio N. आई एम It's सेइंग a shift by wire system now. ओल्ड It's not स्कॉर्पियो. a direct shifter, so it feels much better. It feels much slicker. But नहीं है 0 to 100 इतना भी ज़्यादा नहीं है. It's almost the same, but ठीक है. It's much more comfortable to drive. It doesn't feel cumbersome. Or I used to call it the vibrating prick, that gearbox, that gear lever. क्योंकि साला आइडल पे जब गाड़ी खड़ी होती थी ना, it used to vibrate like this. जैसे the car is feeling horny. हाँ, अरे बाप रे, दैट ओल्ड दैट इवन द 140 bhp स्कॉर्पियो BS6 जो पुरानी वाली थी ना, जो But 140 I bhp में think भी आती the थी, उसमें Scorpio भी ये Classic इशू will होता था. have quite a lot of buyers because of the price bracket A, and it does, resolve the need of a lot of tier 2, tier 3 buyers. मतलब the people in tier 2, tier 3 cities and towns and villages, उनकी वो need को resolve कर देती है. So the Scorpio Classic actually makes a lot of sense. And honestly speaking, although Mahindra is working really hard on its after sales service and everything, same situation with Tata and Mahindra. In लोगों का after sales service में these guys are not aware how to repair these cars, service these cars in the best way possible. कुछ भी electronic issue हुआ, the cars stay inside the garage for days. मेरे पास XUV पेट्रोल के अंदर कुछ स्क्रीन का इशू हुआ, the car stayed in the workshop for 5 days and they couldn't fix it, and I sent it to the main नहीं, Sri वो Durga Auto. एक्सयूवी के बहुत हॉरर स्टोरी सुनी है मैंने पिछले कुछ दिनों से. Yeah. Although मेरे को ADAS में कभी issue नहीं हुआ, which a lot of people have been complaining about, but the screen, it just knocks off in the middle of 1 crore nowhere. ये सब screen wheel लेना, they are all are rubbish and I detest Yeah, of course. cars I with big hate screens. massive screens in cars. Period. Just This is imagine once the new 7 Series comes in with a massive 32-inch back that's screen gonna be for the amazing. rear passenger. Yeah. And the front look of that car itself is very weird. I mean, it just looks stupid, to be honest. Real man. I don't That's know why no what's happening with that's BMW's design director. that's why my father told This is the no most Germans. relaxed podcast I've ever been. Look at Tanmoy. I was about to say Tanmoy Bhatt, but Tanmoy Ghosh lying down like नो, Mahatma He's Buddha. he's तो he's क्या करना है celebrating ये पॉडकास्ट भाई, ये पॉडकास्ट हम क्या कहते हैं, कोई बड़े मतलब सीरियस माहौल he's में नहीं होना celebrating चाहिए. the What if it went rival, viral? celebrating the rival of his होने तो Tesla semi. नो But नो नो honestly speaking, talking about, चल रहे थोड़ी देर में. Give me 2 minutes, baby. I know you want to go and do Lulu. So, नहीं, तो दैट्स व्हाई माय फादर टोल्ड जर्मन्स नो जापानीज. अब अमेरिकन ही बस. no, but what I know of is, you want to come on the podcast too? You want to see people in the podcast? Say hi. Say hi. Say hi. Hi. हेलो. This is the race puppy. His name is Archie, कितना बड़ा हो गया. and ये बहुत बड़ा हो गया. Is it is it faster than the i20 N-Line? It is not. Oh yes, he is. You cannot catch him. No, I literally no. pay people $200 if they're able to catch him. He's really quick. Have you Zero seen to have you 100 seen centimeters the is race? बहुत fast. Have you seen the drag race between the Morris Marina, the Ford Cortina, the two Soviet era cars and a dog? Top Gear के पुराने episode में. I'll have to watch that since you've told me about it now. Hmm? I'll watch it since you've told us about that now. Dogs Moskowitz making 40 cars. Moskowitz podcast 408 Moskowitz 408 versus Ford Cortina versus the dog and versus Lada, what was that, Lada. Riva or whatever it is. Not sure. So yeah. Talking about the screens, I have the C300D these days, and मैं बहुत परेशान हूँ उस गाड़ी से, बहुत ज़्यादा. मतलब it drives really well. It's the AMG line, so it has that Pentalink suspension at the back, lowered, low-profile tires, wide track at the back, nice skirting, aerodynamic shit. Everything's great. Good on power, 261 bhp, 550 Nm torque, ultra smooth engine.
वेरी एफिशिएंट टू 28.2 का एवरेज निकाला उसमें मैंने 100 किलोमीटर के ट्रिप में on a C300D AMG line, by the way. Extremely good car to drive. But Mercedes has Pricing. put in the worst multimedia interface in the whole world. Better मैं be happy with the इतना BMW's dashboard, I परेशान guess. मैं इतना परेशान MG हेक्टर चलाते हुए नहीं हुआ. And that's saying a lot. उसका टच स्क्रीन इतना ज्यादा intrusive है and it has touch pads on the steering wheel. Like, you don't know what the steering is. You cannot change music through the steering wheel. I have small fingers. These fingers are smaller than an average male size. Siddharth Shankar bhai, show me your fingers. What should I show you? Your fingers. Fingers, not your hand. See, Siddharth Shankar's fingers are longer. So is Tanmoy Ghosh's. My fingers are not that long and they are thick-ended. Like, दिक्कत होती है. नहीं, So when I'm using नो, my steering wheel on these new मेरे Mercedes मेरे Benz cars, मेरे 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 फिंगर्स ठीक है, मेरे फिंगर्स उतने लंबे नहीं है. हाँ मतलब मेरे हाथ के रेशियो के हिसाब से थोड़े ज्यादा मोटे हैं. But the thing is कि when I'm using I'm driving at 120 ka speed on the highway and I'm trying to change certain things. I'm trying to change the music. I'm trying to change the menu. The bloody thing doesn't work. It's so bad. Uska voice command system is third class. Uska steering buttons, call it the touch sensor, whatever it is, it's so annoying. वो गाड़ी 74 lakhs की. It's about 1.5 lakh rupees cheaper than a 530i M Sport. Why will people buy it? And what is Mercedes Better doing buy with an M340i. M340i is a perfect car for India. I've seen the 50 years edition That's looks 88 fantastic. lakh rupees? No, it's very expensive. It's about 13 lakh more expensive than the 300D that I have. तो है, लेकिन है तो फोर्ड और सुपरा ना बेसिकली. But honestly speaking, I don't सेम know where सेम गियर. Mercedes-Benz is going with this entire technology scene. Like ergonomics, spot on. I love the seats. मेरे को seat 200 की seats इतनी comfortable लगी थी, C300D की लगी थी. I had the C200 also very briefly, but fortunately I have the C300D for a longer period. But I felt, I mean, this screen situation, be it the S class, the new one, be it this C class, it's so intrusive. And why are they doing this? मैंने EQS देखी और मेरे को एंजाइटी अटैक पड़ गया कि रात के अंधेरे में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ी सी ब्राइटनेस तेज हुई, मेरी आंखें चौंधरा जाएंगी, मुझे कुछ नजर नहीं आएगा सड़क पे हो क्या रहा है. It is a moving theater on wheels. It's trash. I don't know what Mercedes. I'm just glad there are certain brands in the luxury segment which are keeping it very mellow right now. Lexus for one, BMW another one. I mean, I understand BMW is moving forward with its entire design, digital theme, etc. very quickly, but I'm just glad in the present scheme of things, it's in a much better and more ergonomic position. And it's more usable. Touch screens are bad. If they're unsafe, they're gonna cause a lot of problems. I just don't स्टेलेंटिस के understand why. डिजाइनर ने भी स्टेलेंटिस I के भी want to have डिजाइनर ने buttons कहा too. ना, I ही prefer वांट्स टू गेट rid screens. of. Achha, listen, guys. I have to quickly go and get my dog freshened up. He's been crying तो out loud. I'll आप join you guys तो in एक some काम time. करो, आपने आपने जाके आना है वापस. ये नहीं कि हाँ, I too मैंने also am leaving थोड़ा सा आज वही tomorrow office, so I'm a bit exhausted. Right. कोई नहीं, क्या कहते हैं, पॉडकास्ट चलेगा अभी थोड़ी देर. सिद्धार्थ भैया से बातचीत करूंगा, देन श्रेयस विल आल्सो जॉइन अस, एंड देन ईशान भैया यू Cool. कैन जॉइन अस बैक. I might join in again in some time, in a few minutes. हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ. Same here also. I'm also leaving. Got some work also, no? ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, हाँ. आप क्यों भाग रहे हो? अभी रुक जाओ 10 मिनट. नहीं थोड़ा मैं वही बता रहा हूँ ना. Tomorrow got an office and lot of work is pending. तो कल करने का. ठीक है. चलो, चलो. मैं क्या कहते हैं, अच्छा Done. 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, मैं 5 मिनट भी नहीं, फिर आराम से करते हैं पॉडकास्ट. ठीक है ना आज. नहीं, वो श्रेयस ने आना है ना, तो उसके आते आते तक रुक जाओ बस. फिर क्या कहते हैं, क्योंकि उसने भी
So, since he is owned by Tanmay, so I'm going to ask Tanmay about his experience with the brand which he loves the most, the Tesla. So he's going to give his opinion on Tesla Model 3 that he had owned and then the Model S that he had owned. So I don't know. I never owned these vehicles. I never owned these Uh, vehicles. No, he even and I had would. wasted his birthday when his, you know, when the person whom he trusts the most, he booked a Tesla. It was to be delivered. It was delivered, but then something happened. So what do you want to say Like, about Tesla? It's a good car. See, even no. competitors say it's 5 years ahead of what So they one have thing, no, no. told So wait. us. Their electric motor and battery tech probably will be one of the better ones, but I'm still banking on someone like a BYD with its battery blade tech to take over the industry. And Tesla is showing its reliance on the battery blade tech, as they have already told BYD to make batteries for them. Secondly, that head start that they had was 2 3 years ago. Now the other brands are coming up on the same level playing field as that of a Tesla, because others were not so interested. टेस्ला का हाल एक्चुअली देखा जाए तो ओला S1 प्रो जैसा होते जाएगा आगे जाते। रीज़न बीइंग कि एक तो उनका सीईओ बहुत सारी चीज़ों में डैबल करने की कोशिश कर रहा है। कभी ट्विटर खरीदना है, नहीं खरीदना है, कभी कोई एक्विजिशन करना है, कभी कुछ करना है। सो ही इज नॉट फोकसिंग ऑन वन थिंग एट अ टाइम, एंड ओला इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। सच कंपनीज very rarely survive the test of time. I hope I'm proven wrong, because closure of a business is not something that I wish for. It's bad for the economy, it's bad for everyone, it results in job losses. So वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, but again, the way Tesla is heading, I am not very confident about its future. One thing. Second thing is the overhyping of the brand by the fanboys. They worship Elon to the hilt, and that is something I don't really like. I mean, see, even I like Ford, I like GM, I like uh, FCA, I like all sorts of. I even like Honda for that matter. I had an Honda Accord, and probably the one some of the best memories of my life were created in that car. So uh, it's not that I hate any brand as such, but the thing is, I've never gone on to hero worship the CEOs of these companies, even Nissan for that matter. I like the Nissan Maxima a lot. I mean, that car has given me friends for a lifetime through its club that is there in the UAE. So, but then I don't go around hero worshipping Carlos Ghosn by saying that, oh, he's the one who turned around Nissan and all that stuff. No. So I appreciate the. I mean, it's important that we look at the product objectively than to hero worship the CEO, and that is what my whole argument is. Uh, the day Tesla improves its interior quality, its fit and finish, I don't have any issues with the car. But the thing is, as of now, the issues are plenty. Every year, it's scoring really poor. Um, it's bringing out really poor results in the reliability ratings, and that is what is uh, wrong with Tesla at this point of time. They fix all these issues. I have no problems with the brand. Competition is good for the economy, competition is good for the consumer. But I personally, for that matter, till the time they don't improve their till the time they don't improve their Got your friends point. or to my family or anyone in my. So I've driven one. It's fast, which is a good thing. I've driven the RAC Tron GT as well. Uh, the thing is, either Tesla needs to bring out more bang for its buck, or they need to step up on their interior quality. They seem to be a little bit confused. Uh, they're just focusing on the battery and the motor segment, which is okay. Fair enough. I agree with them, but and they have over promised and under delivered when it has come to their autonomous driving program.
but it's fine. I mean, it's a part of the technical team that they need to handle, and maybe in the coming years they'll master it. But other brands are getting there; they are even surpassing them. Mercedes Benz has already gone one step ahead of Tesla when it comes to autonomous driving tech. सो ऐसा नहीं है कि एक एक ही रहेगा, सब रहेंगे और क्या कहते हैं सब एग्जिस्ट करेंगे। लोगों को लगा था फोर्ड बैंकरप्ट हो जाएगी जब 2020 में मार्केट क्रैश किया था कोविड आउटब्रेक के बाद, लेकिन तब क्या कहते हैं फोर्ड का शेयर वैल्यू $5 या $4 पे आके अटक गया था। आज की तारीख में $20 से $25 पे ट्रेड कर रहा है फोर्ड का शेयर। तो ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी का बंद होना इतना आसान नहीं है। कंपनीज मार्केट से पुल आउट कर सकती हैं, लेकिन ऑन द होल बंद होना इज टू फार फेस्ट अ थॉट। यस, Borgward did go bust, but then that was purely down to their parent organization's decision. And on that note, I would like to welcome Shreyas on behalf of Auto Hubby, and welcome to the podcast. We were discussing the Chalo, I take a hello leave as Tanmay, I we were discussed. discussing. Tanmay, okay. I have to चलो take ठीक है, rest. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ओके अस। Okay. हाँ जी, Thank ओके you. सिद्धार्थ भैया, थैंक्स बाय। अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। अब Bye. Bye. now me and Shreyas will So yeah, what you are discussing right now? no. So Siddharth Shankar, before leaving, he was asking me that what problem do I have with Tesla, or what is my whole issue with Tesla. The whole issue is that, see, I accept the fact that okay, their battery technology and their electric motors are ahead of the competition, but ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही ahead रहेंगे। ये तो वही हिसाब है कि लोगों को लग रहा है कि ओला रेवोल्यूशनलाइज कर देगा इंडियन टू व्हीलर सेगमेंट को, तो ऐसा इतना इजीली नहीं होगा। See, अभी जैसा तुम बोल रहे थे, like companies like Mercedes Benz, they have already, you know, surpassed and received their certification when it comes to ADAS and autonomous levels. I mean, they are even going better than Tesla. It's just that the implementation which is taking the time. So we need to wait. Of course, देखिए Tesla is देखिए having the देख, that first mover. देखिए Hmm. देखिए एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि देखो, मुझे टेस्ला एज अ ब्रांड भले पसंद हो या ना हो, मैं हीरो वर्शिप नहीं करूंगा उसकी सीईओ की। टेस्ला ने 2019 तक बहुत अच्छा काम किया, मैं नहीं मना करता कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन वो जो अभी जो कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे। इलॉन मस्क जो काम अभी कर रहा है वो अच्छा काम नहीं कर रहा। इलॉन मस्क को ट्विटर लेना था, फिर उसने इतना हुआ किया, क्या कहते हैं, कोर्ट केसेस फाइल किए, एंड देन ही बैक्ड आउट ऑफ द डील। फिर वो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना एक बार में, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सही नहीं बैठती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इलॉन मस्क के जो सपोर्टर्स हैं जो उसकी हीरो वर्शिप करते हैं, मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती। देखो क्या कहते हैं, मुझे फोर्ड की गाड़ियाँ पसंद है, मुझे निसान की गाड़ियाँ पसंद है, मुझे काफ़ी ब्रांड्स की काफ़ी गाड़ियाँ पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस ब्रांड के सीईओज की क्या कहते हैं हीरो वर्शिपिंग करना चालू कर दूँगा। मुझे निसान मैक्सिमा गाड़ी बहुत पसंद है, लेकिन मैं कार्लोस गोन की थोड़ी हीरो वर्शिप चालू कर दूँगा। तो मेरा ये पॉइंट था रखने का। तो Yeah, I understand. And you know, companies like Audi, Mercedes, Volkswagen Group, in fact, they are मैं running ईवीज को behind. लेके देखो मैं ईवीज के मार्केट में आने से मैं इतना कंसर्न नहीं हूँ, क्योंकि अच्छी ईवीज भी आएंगी। मैंने Hmm. आर एस ई-ट्रॉन जीटी चलाई, बहुत बढ़िया गाड़ी है। Hmm. ठीक है, अगर वैसी ईवीज आती रहेंगी कोई दिक्कत नहीं है। Hmm. हाँ, आई मीन अगर आप उनकी वीडियो क्वालिटी वगैरह को देख, सॉरी वीडियो क्वालिटी बोल रहा हूँ, रियली सॉरी, आई मीन द फिट एंड फिनिश, इफ यू सी, आई मीन देयर अहेड ऑफ व्हाट टेस्ला इज ऑफरिंग। लिटरली टेस्ला इज शिट इन, वो सबको पता है, लेकिन लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो कंपनीज आ रही हैं, ऑफ कोर्स। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, टेस्ला विल फेस दैट हीट व्हेन एवरीबॉडी, एवरी ईच एंड एवरीवन विल कम इनटू दिस ईवी वाला सेगमेंट, एंड
they will start Tesla giving, will face the fight, heat. नहीं, Tesla has tough started. fight to Tesla. Tesla has start टेस, टेस्ला has started to face the heat. अमेरिका में बताऊं क्या है? अमेरिका में ना आपको अपनी क्या बोलते हैं ना, सेडान्स या हैचबैक्स आपको नहीं, क्या कहती, इतनी प्रॉफिट्स दिलाएंगे जितने आपको पिकअप ट्रक्स दिलाएंगे, जो मेरे जैसे रैम हो गया या F-150 हो गया. फोर्ड ने लॉन्च कर दिया F-150 हम्म, लाइटनिंग, रन अवे हाँ हाँ सक्सेस. हाँ. एवरीबडी ऑन ट्विटर, हम्म. एवरीबडी अक्रॉस प्लेटफॉर्म इज प्रेजिंग दैट कार. अच्छा, एक कमेंट है, पहले उस कमेंट को भी ले लेते हैं साथ में. तो अर्थ हमें लिख रहे हैं कि हे हम्म. गाइस, XUV 400 using uses NMC battery tech, so Mahindra can price the SUV really aggressively, but using NMC will be like cheating common people without knowledge of battery who buy it just cause it's EV. हम्म. So you are देखिए, like saying, हाँ, इसकी बैटरी के ऊपर बोलो बोलो बोलो. ठीक है. तो देखिए क्या कहते हैं, अब वो महिंद्रा क्या कहते हैं, क्या बैटरी यूज़ कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. एनएमसी बैटरी पे मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, मैं इतना वेलवर्स नहीं हूँ. लेकिन क्या कहते हैं, हम्म. देखिए, अभी इंडिया में वो फेज है ईवीज का कि हमें अडॉप्शन, कंपनी चाहती कि अडॉप्शन वाइड स्प्रेड हो, वो चाहे किसी भी हम्म. बैटरी टेक से हो, चाहे वो क्या कहते हैं एनएमसी बैटरी हो, चाहे आपकी नॉर्मल बैटरी हो, चाहे कैसी भी, या बीवाईडी की जो बैटरी प्लेट टेक वाली गाड़ी आएंगी वो बैटरी हो, तो कैसी भी बैटरी हो, वो क्या हम्म. कहते हैं, वो कंपनी हम्म. चाहेंगी कि अडॉप्शन हो कैसे भी करके, फिर उसके आगे वो इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं. एनएमसी बैटरी का जहाँ तक सवाल है, मैं उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करके आई विल गेट बैक टू यू वंस अगेन, एंड अकॉर्डिंगली ट्राई टू see whether it's actually cheating common people or not. It won't be right on my part to comment on that because I have not researched for this enough. हम्म. हाँ, बिकॉज मेरे को भी जितना पता है, basically NMC batteries are cheaper. There are two types of batteries in the EV. One is like NMC and other is the LFP. So NMC is basically your nickel cobalt वाला thing. ठीक है. अभी आई थिंक उसमें काफी नेक्सॉन ईवी में भी टेक्निकल, वही यूज होती है ना. आई गेस, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी अभी एग्जैक्टली बैटरी टेक का वो और नहीं है अर्थ कि अर्थ अर्थ क्या अर्थ क्या. हमें एक और चीज अर्थ हमें एक और चीज समझनी चाहिए कि इंडिया एक बहुत ही प्राइस कॉन्शियस मार्केट है. यहाँ पे क्या कहते हैं, लोग हम्म. टेक्निकल्स पे कम ध्यान देंगे, लोग प्राइस पे ज्यादा ध्यान देंगे. तो ये हम्म. चीज़ बहुत हम्म. इंपॉर्टेंट है ये समझने की, इसलिए मार्केट के हिसाब से. अब देखिए, अगर ये अमेरिका होता ना, हम्म. तो वहाँ पे मैं बोल सकता कि हाँ चीटिंग हो रही है, लेकिन ये कहती है इंडिया है यहाँ हम्म. पे. अमेरिका में औसतन हर आदमी क्या कहते हैं, साल का, मतलब उसका मिनिमम पर कैपिटा इनकम जिसे बोलते हैं ना, वो क्या कहते हैं, 6 से 7 लाख रुपए, मतलब हम्म. महीने का 60 से 70 हज़ार रुपए कमाता है, या लाख रुपए के क्या कहते हैं करीब करीब कमाता है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म. देखा जाए तो अमेरिका में जो इनकम है, जो डिस्पोजेबल इनकम है, लोगों के हम्म. पास ज़्यादा है, तो इसलिए वो गाड़ियाँ फिर उस हिसाब से उनको चाहिए. इंडिया में हम्म. क्या, इंडिया में आप बंदा इतना इतना नहीं कमाता. इंडिया में हम्म. अगर आप हम्म. ठीक है आपके पास, तो मतलब आप अमीर हो. ये तो लोगों की थिंकिंग है. हम्म. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें हाँ, समझना चाहिए कि इंडिया अभी बहुत अर्थ प्राइस ने कॉन्शियस ही मार्केट है. हम Hmm. He commented that Nexon uses LFP battery. If this Nexon is using LFP battery, बहुत अच्छी चीज है, because LFP batteries are known to known to be safe, and थोड़ा सा प्राइस जरूर ज्यादा होता है compared to NMC, बट सेफ होते हैं और लॉन्गिविटी ज्यादा होती है. दैट इज द मेन रीजन व्हाई टाटा इज प्रोवाइडिंग अराउंड 8 years वारंटी. अभी इसमें बेसिकली फर्क क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना. तो इट्स अ गुड थिंग कि टाटा मोटर्स ये यूज कर रहा है. ऑफ कोर्स जो तन्मय ने अभी बोला, सॉरी तन्मय, आई इंटरप्टेड यू, सॉरी फॉर दैट नहीं इंटरजेक्शन, नहीं. लेकिन हाँ, तो अभी जो तन्मय ने बोला, अभी हमें थोड़ा बहुत पता है, लाइक वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनएमसी एंड एलएफपी. common people won't be discussing, they even won't be focusing on what is battery tech inside. ठीक है ना, उनको मोटर में है कि वो सिंक्रोनस है कि ये सिंक्रोनस है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं. ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द ईवीज इन द इंडियन मार्केट आर यूजिंग सिंक्रोनस मोटर. ठीक है, लेकिन उनको इन चीजों से मतलब नहीं है. उनको ये मतलब है कि वो कितना वैल्यू देख रहे हैं अपने प्रोडक्ट में. उनको बस इससे मतलब है कितने सस्ते में आ रही है, कितना रेंज दे रही है, कितना भाग रही है, कितने फीचर्स है. नाउ व्हेन इट कम्स टू फीचर्स, अभी इसमें होता क्या है कि नेक्सॉन ईवी में भी अच्छे खासे
एक्सयूवी में भी अच्छे खासे एक्सयूवी को एग्रेसिवली प्राइस जरूर करेंगे ये लोग, ठीक है ना, बिकॉज इट इज यूजिंग एनएमसी बैटरी, देखिए व्हाट आई हैव हर्ड देखिए लाइक फ्रॉम द इनर सोर्सेज, वो देखिए 20 लाख से नीचे देखिए प्राइस होने वाले हैं। सॉरी टू हाँ ठीक। इंटरजेक्ट। देखिए क्या कहते हैं, महिंद्रा प्राइस की गेम बहुत सॉलिड खेलता है, इसमें कोई शक की हम्म बात नहीं है। हम्म। और ये जो एक्स वी 400 है, ये इनके लिए अपने ईवीज की जो उन्होंने जो सब्सिडरी बनाई है ना, उसको हम्म क्या कहते हैं, एक पुश देने के लिए, एक मतलब ब्रांडिंग एक्सरसाइज कह लो या मतलब मार्केटिंग एक्सरसाइज दे दो, उस टाइप का है। क्योंकि अभी एक्सयूवी हम्म के लाइनअप से और प्रोडक्ट्स आनी है, 400 आनी है, 600 आनी है, 800 आनी है, E6, E8, हम्म E9 आनी है। फिर बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन की जो गाड़ियां वो आएंगी, वो एक्सयूवी के नाम से नहीं, वो अलग से नाम से आएंगी। तो क्या कहते हैं, आप उनको भी एक मार्केट हम्म प्रिपेयर करनी ही है। क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ों में हम्म आपको क्या कहते हैं, कुछ 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 जो मतलब है अपने कंपनीज ना, वो अपने लिए मार्केट उनको क्रिएट करनी पड़ती है। इंडिया में, कि इंडिया में हम्म ईवीज के लिए इनहेरेंटली कोई मार्केट नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता, या क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सपोर्ट मतलब इतने चार्जिंग स्टेशन नहीं है। तो इन कंपनीज को अपनी हम्म मार्केट क्रिएट करनी पड़ेगी, इनको इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है हम्म एक इकोसिस्टम बिल्ड करने का। हम्म। सो बेसिकली हाँ, ये बहुत सही बात कही आपने कि इंडिया जो है लैक करता है व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ठीक है, धीरे धीरे इट इज ऑल बिल्डिंग। व्हाट आई पर्सनली थिंक, ईवी इज द टेक ऑफ फ्यूचर ऑफ कोर्स, बट इसका मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग रन में सर्वाइवल नहीं देखता हूँ। अभी हम इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, आई थिंक वी हैव डन आल्सो लॉट ऑफ डिस्कशंस ऑन वेदर ईवीज आर सस्टेनेबल और नॉट, बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं। देखिए हम्म देखिए क्या कहते हैं, एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी, ईवीज रहेंगी, पेट्रोल भी रहेगा, डीजल भी, कमर्शियल, बट सबका अपना अपना एक मार्केट रहेगा, सब एग्जिस्ट करेंगे, कोई हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक भी आएगी, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी आएगा, सिंथेटिक फ्यूल्स भी आएंगे। तो ये नहीं है कि सिर्फ सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करने वाली है। द फ्यूचर इज गोइंग टू बी डाइवर्स, डाइवर्सिटी इज द फ्यूचर, दैट इज हाउ आई सी इट। Diversity in every Yes, field. This is not just related to and yes, automobile, it's related to everything. hmm, 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 hmm. And basically, I अगर क्या believe कहते हैं, in कोई मुझे what हाँ, Toyota is saying. Hmm, hmm, hmm. बोलो देखिए बोलो। क्या कहते हैं, जहाँ तक डाइवर्सिटी का सवाल है ना, अगर कोई मुझे 5 साल पहले बोलता कि इंडिया में भी आईफोन्स बनेंगे, तो शायद लोग हंस देते। लेकिन देखिए ना, आज बन रहे हैं, तो चीज़ों को हम रूल आउट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। हम्म। हाँ, एंड जैसा मैं बोल रहा था, जो टोयोटा कह रहा है हाइड्रोजन इज लाइक अ वे बेटर थिंग। हाइड्रोजन बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ आज, हाइब्रिड, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिड। ऑफ कोर्स टोयोटा हाई राइडर इन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड द ग्रैंड विटारा इन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इज लाइक मच बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो hybrids are like way to go मेरे हिसाब से भी, of course they are like expensive, but आप उसको अगर ईवी से कंपैरिजन करते हो तो comparatively you are like causing less harm to the environment, you are saving your fuel, so in every way, and I think ये भी है कि आप पैसे भी बचा सकते हो अपने। राइट नाउ ईवीज का जो मार्केट है, इट नीड्स अ सैचुरेशन पॉइंट बिकॉज वी आर स्टिल इंपोर्टिंग बैटरीज और पता नहीं लिथियम आयन का क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अभी क्या है, ईवीज का मार्केट अभी भी मास मार्केट में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स तो कोशिश हो रही है, बट अभी नहीं होने वाला है, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है एज फार एज आई सी। तो hybrids are way better. I'm again saying this. ईवीज को अभी उस सैचुरेशन पर पॉइंट पर आते आते बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा इवॉल्व होगी। तो अभी कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। हाँ, ईवीज अपना एक मार्केट जरूर बिल्ड कर रही है। तो दिस इज ऑल व्हाट आई कैन से। एंड in fact, products like high rider, they are uh, a way better option, in fact, when you compare them to
the likes of Creta or Seltos, what I personally feel. If you want performance, go for something like 1.5 DSG वाला combination with Tygoon, ठीक है. Still I'm yet to drive this Toyota Hyryder, तो मेरे को उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि वो कैसी चलती है, कैसी नहीं चलती है, उसके डायनामिक्स कैसे हैं. बट स्टिल इट लुक्स अ बेटर प्रोडक्ट. ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा है, लुक्स गुड. एंड बात करनी चाहिए इन चीज़ों की भी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ईवीज. ऑफ कोर्स अभी टाटा मोटर्स ने भी दे हैव अनाउंस्ड देयर प्लान्स फॉर द टियागो ईवी. सो व्हाट आर योर व्यूज तन्मय ऑन दिस? देखिए क्या कहते हैं, अब टाटा क्या कहते हैं इज ऑल्सो बेटिंग बिग ऑन ईवीज. ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई मतलब शक की बात नहीं है. क्या कहते हैं, लोग बोल रहे टीओर आई है, अच्छा कर रही है. उनकी जो कमर्शियल में एक्सप्रेस की ईवीज है, उसने क्या कहते हैं एक तरीके से उनके लिए ट्रेंड सेट किया. फिर नेक्सॉन ईवी ने तो मतलब काया पलट दी है टाटा मोटर्स के लिए ईवी अडॉप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से. जहाँ तक टियागो का सवाल है, देखिए अगर टिगोर है तो टियागो क्यों नहीं. तो क्या कहते हैं, जिसने शहर में चलानी है गाड़ी, उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि टियागो ईवी विल बी अ बैड चॉइस, क्योंकि ऑटोमेटिक है, एएमटी वाला सिलसिला नहीं है. घर पे लाए, चार्ज पे रख दिया, निकल गए. मतलब कम्यूटर कार पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो काम कर ही लेगी. तो क्या कहते हैं, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी सही है, सेफ रहेगी. एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टाटा मोटर्स के जो क्या कहते हैं सेफ्टी रिकॉर्ड को देखते हुए. तो होना चाहिए. आई थिंक थोड़े से डिले हो गया है, थोड़ा जल्दी आ जाता तो अच्छा रहता. लेकिन चलिए ठीक है, But what I बेटर लेट देन नेवर. personally feel, better late than never. What I personally feel that Tiago will, of course, use the same powertrain option that Tigor gets. So, if you consider this, अभी मेरे को ये भी देखना है कि वो कितनी ज़्यादा सस्ती होगी. बिकॉज अभी टाटा मोटर्स या जो मीडिया में स्पेकुलेशन है कि इट विल बी द मोस्ट चीपेस्ट ईवी इन द मार्केट. बट फिर भी अगर प्राइस का अगर हम अंदाज़ा देखें तो नॉट लेस देन 10 lakhs, जो कि मेरे को लग रहा है. 10 लाख में एक हैचबैक देखिए ईवी में खरीदना. हाँ. देखिए अगर 15 लाख की i20 N9 बिक सकती है, तो 10 लाख की टियागो ईवी में मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज होना चाहिए. पहली चीज़. दूसरी चीज़, आई होप कि टाटा ने ऑलरेडी कुछ स्केल ऑफ इकोनॉमीज अचीव कर ली हो, और थोड़ा सा क्या कहते हैं यहाँ पे एक अग्रेसिव प्राइस टैग के साथ लॉन्च कर रहे हैं गाड़ी को. मैं ये चाहूँगा होते हुए. बाकी क्या कहते हैं, जब रिवील होगी, जब प्राइसिंग आएगी, तभी क्या कहते हैं उस पर. हाँ, तभी हम ज़्यादा बट एक और चीज़ डिस्कशंस हमें कर सकते हैं. हाँ. बट एक और चीज़ है ना कि ईवी ओनर्स को बेनिफिट्स इंसेंटिव भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं. तो ऐसा तो है नहीं कि उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जा रहा है. नहीं, स्टिल benefits मिल रहे हैं. Like one of my friend, he bought an EV in like Chandigarh, and he is like having some kind of, क्या उसे बोलते हैं, सब्सिडी और ये सब जो सब्सिडी. चले आजकल. हाँ. तो सब्सिडी के बाद भी लाइक दैट टिगोर ईवी लाइक इट कॉस्टेड लाइक 13 समथिंग. हाँ तो ठीक है. देखिए, तो टिग दैट वाज हाँ तो टिगोर एक्सएम ईवी मॉडल. आपको तो टिगोर ईवी आपको जैसे मेरे शहर में 13.78 की है. तो क्या कहते हैं, और 306 की क्लेम ड्राइविंग रेंज है. ठीक है. अब मैं टिगोर और अपनी टियागो के टियागो. बीच में अगर मैं चलो 1 लाख का भी डेल्टा लगा के चलो, तो 12.7 में 12.8 में 306 किलोमीटर रेंज वाली गाड़ी ईवी ठीक है यार. क्या कहते हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है. The only thing it compromises is like on the boot, and ज़्यादा और तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला. एंड दी रोड प्रेजेंस देख अभी देखिए सेडान फिर भी देख चल जाती है. देखिए देखिए सीएनजी के कंपैरिजन में तो बूट तो आप कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं ना. नहीं, सीएनजी कंपैरिजन में तो बिल्कुल नहीं होगा. तो तो फिर वो है. आई मीन वट एवर वी आर टॉकिंग राइट नाउ इज ऑल बेस्ड ऑन द तो देखिए स्पेकुलेशंस. देखिए अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है. हाँ. स्पेकुलेशन बेस्ड है. स्पेकुलेशन बेस्ड है, बट देखिए क्या कहते हैं,
टियागो आने के बाद फिर टाटा के पास आगे बचेगा क्या अब इलेक्ट्रीफाई करने के लिए? आपने नेक्सॉन कर लिया, Hmm. आपने क्या कहते हैं टिगोर कर लिया, Basically, they will अब go for टियागो new हो जाएगी। generation architectures that they have built for the like Avanya या Curve का मेरे को नहीं पता है, but प्योर ईवी आर्किटेक्चर पर वो शिफ्ट जरूर करेंगे आफ्टर टियागो। अभी उसके ज्यादा उसके बाद कुछ ज्यादा बचता नहीं है। आई डोंट सी हैरियर कमिंग इन द इलेक्ट्रिक वर्जन, राइट? डू यू सी? रेंज विल ठीक बी है। a very big challenge on that car. यस, बिकॉज इट्स अ बिग एंड हैवी कार एंड सफारी ऑफ कोर्स नॉट। कहीं से भी नहीं, बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। दे ऑलरेडी हैव नेक्सॉन इन देयर रेंज। एल्ट्रोज आ सकती है, ऑफ कोर्स एल्ट्रोज ईवी को शोकेस भी किया था। एल्ट्रोज मेरे को बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं, हाई चांसेस लगते हैं कि एल्ट्रोज ईवी में आएगी, एंड इट विल बी अ मच बेटर अल्टरनेटिव टू टियागो ईवी। I personally feel they would have gone for Altro's EV in place of Tiago EV. What do you think on this? देखिए ये ना थोड़ी सी टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब करना चाहिए था Hmm. इनको, क्योंकि इनको अपने प्रीमियम हैचबैक को पहले लाना चाहिए था। बट अल्ट्रॉस को लेके मैंने सुना है, जहाँ तक ये बात है कि उसका इलेक्ट्रिक मोटर या जो है अपना बैटरी बैक है, वो जो हो रहा है उसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस बहुत खराब हो जा रहा है। आई थिंक उसको लेके कुछ चैलेंज है, उस पर वर्क अराउंड कर रहे हैं, होपफुली जल्दी हो जाए। Basically, alpha architecture is a like flexible architecture. It is advanced and agile. Whatever they have showcased that it can accommodate anything. It is flexible for any car shape. ठीक है, and it is even compatible with electric and hybrid powertrains. So I don't think कि बहुत बड़ा challenge है। हाँ, कुछ डेवलपमेंट के दौरान जरूर challenges होंगे, but they've already showcased Altro's EV in 2020 Auto Expo and बट 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 जेनेवा एक चीज मोटर शो मुझे में भी समझ नहीं दिखाया आ रही। था। हुँ, बट सोचिए, मैं एक थोड़ी सोचने की बात है कि अगर टाटा का अल्फा आर्क आर्किटेक्चर इतना अच्छा होता तो वो 6 स्पीड का नेक्सॉन का गियर बॉक्स क्यों नहीं फिट कर पाए उसमें? ये भी एक बात है, ये भी एक बात है। अल्ट्राज आई टर्बो डिट्यून्ड है ही इसीलिए क्योंकि उसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स नहीं फिट कर पा रहे थे, और वो 5 स्पीड के हुँ, गियर बॉक्स में अपेरेंटली अपेरेंटली सिर्फ 150 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क लिमिट है, या हुँ, 200 तक की है, सॉरी 200 तक की। हुँ। सही बात है। तो ये तो है। इन पे इनको अभी इन चीज़ों पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। देखते हैं क्या करते हैं। टियागो ईवी का अनाउंसमेंट ऑन वर्ल्ड ईवी डे थोड़ा-सा ऐसा था कि अनएक्सपेक्टेड था। बट ठीक है, कंपनी इज़ लुकिंग टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर एज़ दे से। एंड अभी Hyundai and companies like Maruti is of course testing some of prototypes in electric version, but मेरे को नहीं लगता कि अभी कुछ ऐसा अनाउंसमेंट वो कर रहे हैं। तो मारु दे मारुति आर मा, बिग गेम। मारुति मारुति और टोयोटा का ऐसा है कि उन्होंने अभी के लिए क्या कहते हैं हाइब्रिड्स पे बेट किए। देखो, अर्थ वाज टॉकिंग अबाउट महिंद्रा मेकिंग फूल ऑफ पीपल। ऑफ कोर्स महिंद्रा ने भी बनाया है लोगों का माइक्रो हाइब्रिड इन सब के नाम पे। मारुति भी बनाते आई है SHVS और स्मार्ट हाइब्रिड के नाम पे। सॉरी, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट मैं बोल रहा हूँ ये बहुत खुले में। ठीक है, एंड नाउ होंडा जब आई अपना सिटी का हाइब्रिड टेक लेके, तो ऑफ कोर्स इट वाज समथिंग समथिंग यू कैन से इट इज अ हाइब्रिड। अभी मारुति सुजुकी इफ दे आर बेटिंग ऑन हाइब्रिड, इट इज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ टोयोटा। अगर टोयोटा नहीं होती तो एक बात अलग थी। टोयोटा का हमेशा से एक बिलीफ रहा है कि वी विल फोकस मोर ऑन हाइब्रिड। अभी इनफैक्ट दे आर शेयरिंग कार्स और प्लेटफॉर्म्स, और सिर्फ एक रीबैजिंग का एमओयू जो भी हुआ है उनका। तो दैट्स वाई मारुति का जो वो टेक है जो थोड़ा सा एडवांस हो पाया है। वरना मारुति सुजुकी भी लोगों का बनाते ही आई है शुरू से, SHVS के नाम पे। एंड ठीक है, और बनाया नहीं है, सिर्फ गाड़ी खरीदने तक नहीं बनाया, इनफैक्ट आफ्टर सेल्स में भी बनाया है। वो उन हाँ, तो सीट नहीं के तो नीचे एच पी बैटरी एस फिट एच का तो करके उन्होंने नाम अल्टरनेटर रखा था लगा ना, के पता नहीं कैसे। स्मार्ट। बोलो बोलो।
स्मार्ट am I व्हीकल audible? हाइब्रिड थोड़ी सिस्टम ने आवाज बहुत कट गई लोगों थी। को हाँ। ठीक। हाँ, स्मार्ट व्हीकल हाइब्रिड सिस्टम ने बहुत लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया, बहुत लोगों के बहुत सर्विस बिल्स भी बढ़ाए। हम्म ठीक है। सो बेसिकली आफ्टर सेल्स में बहुत लूटा इन लोगों ने, एंड सेम गोज फॉर महिंद्रा। महिंद्रा ने लोगों को माइक्रो हाइब्रिड लिखकर बनाया, एंड पीपल दे डोंट रियली अंडरस्टैंड कि एक प्रोडक्ट की रियल इंजीनियरिंग होती क्या है। ठीक है, लोगों को बस बोल देना है। डीसीटी फेलियर्स जब हुए थे तो ऑफ कोर्स किया ने भी वो चीजें फेस की थी, बट बिकॉज ये चीजें मीडिया में हाइप नहीं होती हैं तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। वी आर हैविंग सो मच फ्यूल पंप फेलियर्स इन Hyundai i20 N-Line particularly, and people are also reporting, some people are also reporting this in like Venue and all। नॉर्मल में धीरे धीरे फ्यूल पंप का इशू आ रहा है, बट मीडिया को फर्क नहीं पड़ता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली। हम क्या मीडिया की ही सुन रहे हैं जो मीडिया बोल रही है, मार्केट में हो क्या रहा है अभी किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं है। मीडिया ने ये बोला तो चलो ये हो रहा है। एक बहुत वैसे करने की जरूरत है। आज के वक्त फिलहाल कोई प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो चाहे वो ईवी हो। ईवीज आर स्टिल फेसिंग दैट रेंज एंजाइटी प्रॉब्लम। ठीक है, द ओनली perfect EV I find in the segment is like Nexon EV and ZS EV। Honestly, ZS EV is a great product, but it is priced on the higher side। अगर उसका प्राइस would be like less than 25 ना, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वो। I'm telling you, it's the नहीं, most देखिए, powerful मैंने मैंने EV in the मैंने in under 30 lakhs। उसके बाद मैंने आप EV6 देख सकते हो जो कि किया की है। तो मैंने बहुत ही अच्छा मैंने प्रोडक्ट बनाया है एमजी ने, बट नहीं नहीं, तो सॉरी टू इंटरजेक्ट, मैंने एमजी के कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस किए, चलाए। एमजी की एचएस चलाई है, एमजी की RX-8 चलाई जो उनकी बड़ी एसयूवी है, उनकी एमजी जीटी सेडान चलाई। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द इंटीरियर क्वालिटी, बाय द पेंट क्वालिटी ऑफ द व्हीकल्स, एंड बाय द ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन दैट दे ऑफर, दे आर प्रीटी गुड। 6 साल 2.5 लाख किलोमीटर की वारंटी भी देते हैं वहाँ पे दुबई में, तो क्या कहते हैं, it's all, I mean, there's all the reason to go for that vehicle. There's no reason why to avoid it. I drove a couple of other Chinese brands as well, and they were pretty good, to be honest. मैंने हवाल की भी गाड़ियाँ चलाई। मैं तो काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी बुरा लगा कि हवाल ने अपना इंडिया आने का प्लान कैंसिल कर दिया। बुरा इसलिए लगा क्योंकि क्या कहते हैं, कंपटीशन इज द नीड ऑफ द हार, कंपटीशन इज व्हाट विल मेक अस मेक आवर ब्रांड्स इम्प्रूव, कंपटीशन इज व्हाट विल ब्रिंग अस बेटर चॉइसेस फॉर द कंज्यूमर्स। अपने पास अब देखा जाए तो अब हमारे पास क्या कहते हैं चॉइसेस है ही कितने से। 30 लाख के नीचे अगर आपको कोई एसयूवी लेनी है जो 4x4 भी हो, बॉडी ऑन फ्रेम भी हो, क्या ऑप्शन है आपके पास स्कॉर्पियो के अलावा, बताइए? कुछ भी नहीं। हम्म, सही बात कॉम्पैक्ट है, सही एसयूवीज की बात बात करते हैं, क्रेटा सेल्टॉस को लेते हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास कुशाक है, मैं बट फिर भी बोलता हूँ कि कुशाक में अगर आप बोलते हैं कि ईपीसी की इश्यूज हैं, तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, उसकी क्वेश्चनेबल जीएन कैब रेटिंग्स। हालांकि क्या कहते हैं कुशाक भी टेस्टेड नहीं है, तो इसलिए क्या कहते हैं उसको भी हम उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। एस्टर है, एस्टर एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन एस्टर का भी सेम वही है, गाड़ी बिक कितनी सी रही है, मैंने तो आज तक शायद ही कोई रोड पे देखी है। है। सो एक ढंग से देखा जाए तो एस्टर तो काफ़ी हद तक फ्लॉप निकली है। हम्म दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास? टोयोटा हाई राइडर और ग्रैंड विटारा जो अब आएंगी, बट अभी तक तो था नहीं, तो ये चीज़ तो है। Still, I would like to appreciate Toyota for offering all-wheel drive powertrain, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। I know कि many of them will not buy, but at least they are having it as an option। ये बहुत ज़रूरी है। मार्केट को आप थोड़ा बहुत वो कर सकते हो इस चीज़ से। XUV 700 is also getting it, and Safari needs this। I'm personally saying this। तो ये चीज़ है। बाकी इसके अलावा फिर भी आप इन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम से कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। इट्स लाइक सॉफ्ट रोडिंग काइंड ऑफ थिंग इज़ ऑल यू कैन डू। और मार्केट में ऑनेस्टली जैसा तुमने कहा कुछ नहीं बचा है। दैट बेस्ट एरा और द फेज ऑफ आवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज गॉन। और अभी ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है अब इंडस्ट्री में। देखिए देखिए, अगर पुराने टाइम की बात करते हैं ना,
2005-6 में आपके पास जब हैचबैक लेनी थी तो आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस होते थे? 2006 की बात करते हैं, ठीक है? आपको अगर एक मतलब फन टू ड्राइव चाहिए लेकिन अच्छी हैंडलिंग के साथ चाहिए तो आपके पास थी एक, आपके पास पालियो में 1.2 का ऑप्शन था, पालियो में 1.3 1.9 डीजल का ऑप्शन था, पालियो में आपके पास 1.6 पेट्रोल का ऑप्शन था। फिर आपके पास एक ओपल कॉर्सा सेल होती थी 1.6 पेट्रोल, आपके पास ऑप्ट्रा एसआरवी थी, आपके पास शेवरले की एवो युवा थी अगर आपको क्या कहते हैं ज़्यादा पावरफुल गाड़ी नहीं चाहिए। आपके पास क्या कहते हैं स्विफ्ट होती थी 1.3 पेट्रोल, जिसकी हैंडलिंग काफ़ी टॉप नॉच थी उस टाइम के लिए। हम्म जेन थी आपके पास अगर आपको ज़्यादा फास्ट गाड़ी नहीं चाहिए आगे। हम्म तो क्या कहते हैं देखा जाए तो ऑप्शंस कितने सारे थे उस टाइम पे। आज की तारीख अभी में आज की तारीख हम्म में हम्म आज की तारीख में लोग क्या कहते हैं बोलते हैं अरे यार स्विफ्ट है, स्विफ्ट ले लेते हैं। जब आपके पास सामने गाड़ी है अच्छी सी इग्निस, लोग नहीं लेते उसको। व्हाट अच्छी डू यू गाड़ियाँ थिंक अबाउट मिलती। C3? C3 अगेन क्या कहते हैं लोग तो यही बोलेंगे फीचर्स कम है, फीचर्स नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं गाड़ी जो फंडामेंटली जो उसके फंडामेंटल से काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा इंजन है, क्या कहते हैं काम का फीचर्स है, आपके पास वायरलेस कार पे एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सब मिल जाता है आपको उसमें। Basically, the car is adequate for its price. That's it. अच्छी राइड क्वालिटी मिल जाती है। हाँ, उस प्राइस रेंज में आपको 9.5 लाख में और क्या ही मिलेगा। And same although punch is on the higher side. ठीक है ना, थोड़ा सा महंगा चला जाता है, बट उसके कुछ वेरिएंट्स में मुझे अभी भी वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। इट्स जस्ट दैट कि लुक्स उसके थोड़े से पीछे से रेयर प्रोफाइल उसका थोड़ा सा अजीब सा है, तो मुझे नहीं लगता उसको देखकर शायद। फिर भी पंच ने भी ठीक ठाक मार्केट बना लिया है। एंड हाँ, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। तो चलिए जी क्या बात कहते रही हैं आई थिंक मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी के तो प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली वर्थ नहीं लगते, बिकॉज आप खुद देखो ना, एस्प्रेसो, वैगनआर। देन में आर यू लाइक सेइंग समथिंग? मेरे को आवाज नहीं आ रही थी। हाँ नहीं मैं कहता हूँ कि चलिए अभी इस नोट पे हम क्या कहते हैं पॉडकास्ट काफ़ी लंबा खींच दिया हमने। तो 1 घंटा 12 मिनट हो गए हैं, टाइम भी हो रहा है 11 ओके, बजे। हाँ, ठीक है। तो इस नोट पे हम एंड करते हैं। थैंक्स अलॉट फॉर ओके, ज्वाइनिंग इन। जो जो नहीं ज्वाइन इन कर पाए आप प्लीज़ क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपलोड हो जाएगी साथ के साथ ही। और क्या कहते हैं हम आपको क्या कहते हैं अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। हफ्ते में एक बार करेंगे फिर से, फिर वीकेंड पे करेंगे। तो एक वीकडेज में एक वीकेंड पे कुछ ऐसे टाइप का अभी हम शेड्यूल करते रहेंगे। तो थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स टू अर्थ डाइकास्ट एक्सपर्ट अनिकेत चौहान एंड नवदीप सिंह फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड यू गाइस कैन प्लीज़ शो लव टू अ चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्या कहते हैं शेयर कीजिए आगे इस पॉडकास्ट को ताकि और लोग भी देख लें। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन एंड ऑन दैट नोट मी एंड श्रेयस विल बी taking your leaves. Thanks a lot for joining me. थैंक्स।